तो प्रेम से आप लोगों को हील करती हैं, इमोशनल अवेयरनेस लाती हैं उनमें, और उनको कोच करती हैं। सो मुझे क्या लगता है कि एक हीलर की भी अपनी ही एक अलग ही जर्नी रहती है, राइट? तो हीलर ऑल्सो नीड्स समवन टू हील, करेक्ट, राइट? तो इस जर्नी में आप क्या हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि कैसे, मतलब आपकी जर्नी रही है, और आज आप जो प्रेम से आई हो वो किस तरह से कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं? सो श्वेता, आप ये क्वेश्चन पूछ के जैसे वो ना वो पास्ट की बहुत सारी चीज़ें आपने एक एक विंडो ओपन कर दिया है आपने. सो the way I would like to answer this is multiple times I have started again. Now there are few things, let me tell you. जब मैं कॉलेज में थी, मेरे भाई की एक्सीडेंट हुई थी और उसी महीने उसकी शादी भी हुई, और 17 दिन उसकी भाई की शादी के 17 दिन के बाद उसका डेथ हो गया. तो पहला फ़ोन कॉल जो आया था घर पे, मैं थी और मैंने उठाया था वो कॉल, और वो न्यूज़ मुझे मिला था कि भाई का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है. तो उसके बाद तो एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुआ एंड ऑल दैट हैपेंड. व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस हियर इज, उसके बाद कोई भी फ़ोन मैं उठा नहीं पा रही थी. फ़ोन का रिंग शुरू हुआ कि नहीं, मेरी हाथ पैर शेक हो जाते थे, मेरी पैल्पिटेशन बढ़ जाती थी. It took me almost 3 to 4 years to again come back and attend phone calls. मतलब रिंग हुआ कि मैं डरना शुरू, उस हद तक. तो ये एक आप बीती एक्सपीरियंस है which I started again to attend the phone calls, and मेरी प्रोसेसिंग, इमोशनल प्रोसेसिंग हो जाने के बाद. सेकेंड रिलेटेड टू दिस ओनली, कि भाई की शादी हुई और 17 दिन के बाद, जैसे मैंने बोला, उसकी एक्सीडेंट हुआ था. एंड देन सो आई रिमेंबर द डेट, इट वाज 26th नाइट उसकी एक्सीडेंट हुई थी. February 9th को उसकी शादी हुई थी, एंड 27th मॉर्निंग को ही पास्ट अवे. तो उसके बाद कोई भी मैरिज मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी. आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन कि कोई भी अगर मैरिज इन्विटेशन आता था घर पे, और हम उस शादी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करती थी, बिकॉज द मोमेंट अगर मैं वहाँ जाती थी तो पूरी सारी पास्ट मेरी एकदम लाइव और मेरे सामने, जैसे कि अभी मेरे भाई की भी शादी तो ऐसे ही हुई थी. तो ये सारा जो फियर फैक्टर एंड ट्रॉमा मेरे को ऐसे घेर के रखा था कि आई स्टॉप्ड अटेंडिंग मैरिजेस फॉर मेनी मेनी ईयर्स. एंड जैसे मैंने बताया कि इसको भी मुझे काफ़ी टाइम लगा टू कम बैक, एंड आई स्टार्टेड अगेन टू गो एंड पार्टिसिपेट इन fun activities, to participate again in events, and auspicious events and all that. एक और सो ये सारे तो मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे था. एक और प्रोफेशनल लेवल पे जो मैंने रीस्टार्ट किया, आई वुड से हाउ आई स्टार्टेड अगेन इज व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर. मैं आई वाज इनटू आईटी इंडस्ट्री, मैं आईटी फैकल्टी हुआ करती थी, एंड आई यूज्ड टू टीच फॉक्स प्रो, C++ टू इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स. एंड तभी कुछ कपल ऑफ महीने में मुझे पता चल गया था कि ये मेरी कप ऑफ, लाइक इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज आई वॉज नॉट एंजॉइंग. मैं जाती थी कॉलेजेस एज अ फैकल्टी, मैं लेती थी लेसन्स, क्लासेस लेती थी, बट देन कमिंग बैक मुझे अंदर से ही बहुत ज़्यादा सफोकेशन लगती थी कि ये दिस इज नॉट द स्पेस आई वॉन्ट टू बी. सो काफ़ी साल लगे मुझे ये समझते समझते कि आई एम मोर इन टू understanding the behavioral and psychology part of human beings. And eventually पहला जॉब मुझे ऐसे accidentally, I mean I would say that out of nowhere, I got an opportunity to be the customer care executive of Airtel, and I was district in charge of Sambalpur district in Airtel, right? तो वहाँ पे we used to talk to people. एंड तभी धीरे धीरे मुझे रियलाइजेशन होना शुरू हुआ कि
I am enjoying it. I love talking, connecting with people, understand their problems, listen to them, and then give them solutions. Though it was a different kind of solutions those days, but then तब मुझे ये समझ में आ गया था. फिर उसके बाद मेरी शादी हुई. We went to Delhi, and then Delhi में मुझे then it was again universe plan or a coincidence, I don't know. But the second job that I entered into was into recruitment and training. And there the first time I felt कि हाँ, this is like coming back home, training. And मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ, ये जगह में मुझे actually build करना है. This is the space I want to grow. So that's how I came to training and facilitation. And then when I invested few of my years in working as a trainer and facilitator, there I got to know that let me go a little more deeper. Okay. So वो पूरा जो 3-4 years and 5 years था, उन दिनों में parallelly processing the emotions of my brother's death, coming back to attending phone calls, coming back to attending different marriage events, ये सारे parallelly मेरे हो रहे थे. जैसे जैसे मैं अपने ऊपर काम करती गई, वैसे वैसे ये सारी healing मेरी धीरे धीरे I started actually knowing myself. I started actually, जैसे मेरी खुद की प्रोग्राम है परिचय पहचान खुद से. So I think ये सारी experiences की वजह से मेरी आज की वो प्रोग्राम actually it was born from my own experiences. So ये सारे मेरे comeback थे. These are the things I have started, and like again actually coming back to that. And the last story that I would like to share is the physical part. So जब emotionally चीजें बहुत ही डिफिकल्ट होती है प्रोसेस करने के लिए, वो फिजिकली भी सिम्टोमेटिकली आपको दिखाई देता है. सो ये जो 4-5 साल मेरे लगे, उन दिनों में माय फिजिकल हेल्थ आल्सो गॉट डिटोरिएटेड. सो व्हाट हैपेंड इज आई एक्चुअली हैड अ डिस्क प्रोलैप्स. माय स्पाइन वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन. एंड डिस्क प्रोलैप्स मतलब आपका जो कमर का हिस्सा है बैक में, वो डिस्क होता है, वो मिसअलाइन हो जाता है. सो इन दैट केस आई बिकेम बेडरिडन. I was not able to stand properly. वो कुछ महीने वैसे चला. And वहाँ से फिर again I started understanding my physiology, my emotional health. तो जैसे जैसे ये heal होता गया, वैसे वैसे धीरे धीरे body भी heal होती गई. And then I became a yoga practitioner. I actually took the help of yoga, took the help of different coaches. एंड उस हिसाब से मैंने फिर अपने आप को हील किया. एंड देन इसी की वजह से आई बिकम अ हीलर, आई वुड से. एंड आई देन नाउ हेल्प अदर्स टू प्रोसेस देयर इमोशंस इन अ इफेक्टिव वे, सो दैट दे get connected with their own self once again. So this is the whole journey of many stories of coming back home and meeting myself again. So I would say ये सारे event has shaped me who I am today. Wow, such a beautiful journey. Thank you so much, Shweta. So Shweta, being a single mother and raising a teenager boy, I'm sure you're doing it very beautifully, because being a single mother and वो सारी जो responsibility आप निभा रहे हैं, वो तो आपको करना ही है, वो मैंडेट है, उसकी कोई ऑप्शन नहीं है. What I am asking is the other side. जब आप खुद as an individual, आपके भी vulnerable side होंगी. How do you take care of that and how do you balance this? Like Shweta being vulnerable and Shweta is a mother, because ये एक रोल है और ये आपको अपने लाइफ के लिए एक जो आपकी खुद की जो you owe to your life as well, right? So how do you balance these two personality in your life? Honestly, Prem Sai, as a single mother or as a single parent, I must say, because it's a half and half responsibilities you have to carry. Half of the time you are a father, and rest half of the time you're a mother. And you have to tackle each and every situation thinking that if I would have been him, how I would have taken that decision.
So, like, and it's been 5 6 years now. Um, During this whole process, what initially मैंने अपने साथ में शायद justice नहीं किया, because what I felt is my son looks up to me as a superhero, as a super mom. So he always wanted to see me a perfectionist, right? Or rather, I always want to project myself as a perfectionist, taking care of each and everything. His, demands, meeting all the requirements and needs. At the same time, playing with him, his favorite sports, be it swimming, or be it getting into some activity, right? Cycling and bike riding and all. So I always showed him that I have got that potential. I have full capability of being a support system to which he can look up to every time. And he need not worry about any situations or any problems in his life. And because I am the single point of contact for him, to see the world through my eyes. Okay, तो उस समय में मुझे हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना अपना मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना था. और वो बहुत ही मतलब एक फ्रेजाइल स्टेट होती है बचपन की भी, कि जब वो 9 से 10 और 10 से 13 साल, मतलब it's a stage, a transitioning stage for them as well. Correct. So उस सब ये सब करते करते, एंड आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है हर पेरेंट का, कि बच्चों को वो सब दिखाते हैं कि नहीं हम सब ये सब करके आए हैं, हम स्ट्रांग है, और वो फाइटिंग मोड में हमेशा रहते हैं. लेकिन ये सब करते हुए हम कहीं ना कहीं अपने खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सेल्फ. एग्जैक्टली. और ऐसा करते करते, क्योंकि मुझे क्या लगता था कि मैंने अपने आप को कभी देख ही नहीं पाई, क्योंकि वो चीज़ें इतनी इतने जल्दी सब हो गया, और मुझे बहुत एक्शन मोड में ही रहना था हर जगह. तो वो पॉज लेके अपने बारे में सोचना और अपनी वल्नरेबिलिटीज के बारे में सोच के उसको रिफ्लेक्ट करना, वो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता था कि ये एक बहुत लग्जरी बेनिफिट, वो जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती उस समय पे. लेकिन over time I realized that I cannot I cannot have my son as my caretaker of emotions, right? Later in life. Exactly. So he should not carry my emotions and lead his life in that way. तो एक पॉज लिया, एक ब्रेक लिया, और उसे साथ में बिठाया, और अभी भी वो एक्सरसाइज में करती हूँ टाइम टू टाइम. मेरी इनसिक्योरिटीज़, मेरी वल्नरेबिलिटीज़, मेरी वो सारी सिचुएशंस जहाँ मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है या इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, और उसे भी इसी तरीके से सिखाती हूँ कि लाइफ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, राइट? बट यू हैव टू ऑल्सो be ready to accept it the way it is coming to you. Correct. Right? It need not be कि तुम हर बार ही सक्सेस तुम्हें मिले. जरूरी नहीं है कि तुम जो स्पोर्ट करो, जो इवेंट करो, जहां जाओ वहां पे तुम्हारा वाहवाही हो, because there are people, they have their own judgments, they have their own way of living. So लाइफ के को जैसे आ रही है वैसे ट्रीट करते हुए, और अपने अंदर की वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए, उसको उसी हिसाब से प्रोसेस करते हुए साथ में बढ़ना है. तो बिल्कुल जैसा आपका क्वेश्चन था कि yes, I did realize late in my life that there are my self responsibilities. I have to take care of it, and at the same time I have to accept the fact that I cannot always be a strong persona, right? There are some times where I will break down. There are some times where I have to look upon somebody, some mentor, some friend, or some group wherein I should go and talk, express their emotions and all that. Yeah. Exactly.
and that was a time wherein I have also started writing poetry. Beautiful. And I wrote a book recently, and it got some good feedback. And I started going out in events, sharing whatever I experience in life in the form of poetry. तो ये सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक अप्रोच रहता है इन सभी चीज़ों का, और ये अपने आप होती जाती हैं. बस इट इज़ लाइक यू हैव टू अलाउ द थिंग्स to happen the way it is meant to be. So I think that's how. Yeah, I think I would like to add something here. So as I asked you, showing these two hands, like you are projecting yourself, playing a role in the world, being a mother or being a some role in your life, and the other side is you, the vulnerable side of yours. Right. अगर इसको प्रोजेक्टर की तरह अगर हम देखें और प्रोजेक्टर के पीछे जो मूवी लगाएंगे वही मूवी ही बाहर दिखेगी, राइट? सो इफ दिस मूवी इज सॉर्टेड, एंड जैसे आपने बोला कि नो वन इज परफेक्ट एंड लाइफ इवेंट्स कीप्स हैपनिंग, सम प्लीजेंट सम अनप्लीजेंट वंस, एंड इफ यू नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट, then the vulnerability side of ours is also taken care of, which means with that pause, with that reflections, and then with the call to action of something that you figure it out for yourself. When this is taken care of, then you play this role as also very beautifully, right? And being a parent and a single parent, I think आपका बेटा भी यही सीख रहा होगा आपसे कि जैसे हम लोग पहले होते ना, मर्द को दर्द नहीं होता, and all those stuff that creates a lot of conditioning, right? But in this case, he is meeting a genuine human being who is full of strength as a mother, and वही सीख भी वो ले रहा होगा, and at the same time he would also be learning that it is okay to fail, it is okay to cry, it is okay to feel weak at some point of time, and he would also be learning कि इसके बाद he would also be learning like how to bounce back, absolutely, again start with a lot of strength, right? So expression of your emotion is not weakness, and crying is not weakness, it is rather the strength, because you have the capacity and bandwidth to express it beautifully. Absolutely. So I would congratulate you for that, being such a beautiful human being for your son, and taking care of your roles that you play, and also your vulnerable side of yours. So great. Thank you. So Prem Sai, I have this question, and I think this is the best time to ask. How do we know that we are making a genuine change? और ऐसा तो नहीं कि किसी सिचुएशन से हम एस्केप कर रहे हो just for the sake of starting over again. तो ये कैसे पता चले कि whether this is a genuine start or we are simply getting rid of that particular situation? Yeah. Very interesting question, Shweta. Simple सा चीज है. Let's understand with two words. I would say the first is a reactive mindset, जो हम बोल सकते हैं escape और reaction, and उसके opposite है observation mindset. अगर हम सही में starting again कर रहे हैं, तो anyone would be in a observation mindset. और अगर हम रिएक्टिव माइंडसेट से शुरू कर रहे हैं तो हम एस्केप करना चाहेंगे, विच इज लाइक इट वुड बी ड्रिवन बाय अर्जेंसी, राइट? इट वुड बी मोर ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम दैट, कि यू डोंट नो कि करना क्या है, बट आपका फोकस मेजरली अवॉइडेंस पे होगा. बट अगर आप सही में स्टार्टिंग अगेन के सिचुएशन में हो, और आप अपने आप को अगर एक असेसमेंट की तरह देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, एम आई फीलिंग अर्जेंसी, then you need to really think twice and take a pause and understand exactly, do you need to start again, or you need to really understand your situation. So if there is a situation of urgency, if there is a situation of avoidance, if there is a situation of that कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना ही है, if the focus is more on this, then definitely it is not about starting again.
it is about avoidance. Okay. If it is more about observation, if it is more about that this is an unpleasant situation, मेरे को यहाँ पे रहना नहीं है, but let me figure it out. Let me observe a little more. Let me understand myself. Like let me focus on myself and understand what do I actually want. Let me research a bit. Let me talk to a few more people. And then, probably I might take a help of a coach or maybe someone who would help me to understand what would be the right, way to start something again. Yeah. So, can you see the difference? यहाँ पे urgency नहीं है, यहाँ पे एक pause है, यहाँ पे एक research mindset है, यहाँ पे let me figure it out वाला mindset है, यहाँ पे मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा और टाइम दूंगी समझने के लिए अपने आप को कि मुझे मेरे लिए क्या अच्छा होगा, और ये भी है कि क्या मैं कर सकती हूँ, माई स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर द थिंग्स आई शुड नॉट बी डूइंग. तो ये सारी चीजों को क्लैरिटी में लाने के लिए इट इज मोर, यू नीड लिटिल टाइम. सो दिस स्पेस इज अबाउट दैट you are actually psychologically ready to figure it out, your next move, and create that space of starting again. But the other side is all about urgency, all about bhagna, all about escape, all about restlessness of escaping something. Right. So both are a different space, and I think it is always better to take that pause and assess this for yourself, whether you are in which side, right, and then what do you want next. Absolutely. So while wrapping up, how do you define starting again in one sentence? Well, Shweta, I would like to add few sentences instead of one sentence. Right. So starting again for me, according to my experience and witnessing a lot of clients in their healing journey, it is more of discovering yourself. It is more of parichya with your own self, like my program says, parichya pehchan khud se. When I say discovering about your own self, what I mean is knowing your past stories, learning from that, learning how to not get entangled with that, and moving forward with openness, and also questioning your old beliefs, and see if that still works for you. Not concluding about yourself that I'm not good enough from your past stories. Maybe take that first step and then see, figure it out, research, talk to people. So, and talk to yourself also. So मेरे ख्याल से starting again is all about discovering yourself in the whole journey, because जब गाड़ी भी चलती है ना रात को, तो 200 मीटर ही लाइट दिखती है, और हम वो 200 मीटर जाते हैं, फिर आगे और थोड़ी लाइट दिखती है. So and that's how you आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो. So starting again is all about take that first step, know yourself, take the second step again, know yourself, and keep knowing yourself and keep moving forward. So for me, that is that. Absolutely. How beautiful you have mentioned this. And I would also like to add just a couple of points. कि like as you said कि past को साथ में रखते हुए, अपने आप को खुद से समझते हुए, हमारी capabilities, हमारी स्किल्स पे ट्रस्ट करते हुए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि हमको स्टार्ट करना है तो एक बहुत लंबा लीप लेना है. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट डिफाइनिंग स्मॉल चंक्स or small steps and then win. So that actually makes the whole journey simpler. And it's all about navigation, as you've mentioned, like light 200 meters and then reaching out. So navigating yourself in this journey of life is rather all about rather hopeless maybe hope hai, exactly, and helpless maybe help hai. Right. So trusting, as you said, trusting yourself and your skill set and in the journey. Right. So that's all about starting again. I hope you all like this podcast. So we would like to know more
ऑन विच टॉपिक यू वांट अस टू स्पीक, हमारे साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि हम कैसे आपके साथ जुड़े रहें, और अगले पॉडकास्ट को जल्दी ही शूट करेंगे। एंड वन मोर थिंग इज, आप अगर कुछ शुरुआत कर चुके हैं या आगे को ये पॉडकास्ट देखने के बाद अगर आप शुरू किए हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कैसे शुरुआत किया, सो दैट दूसरों को भी आप इंस्पायर कर सकें। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।